प्रणाम, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप सभी में विराजमान उस परमात्मा स्वरूप आत्मा को मेरा नमस्कार है। Je salue l'esprit divin et toutes les énergies qui est en vous. I salute your divine soul and all the divine energies surrounding you. Namaste, pranam. Myself, Hindu priest and therapist, Pandita Varuna Lakshmi from France, prêtre hindou et thérapeute. Je suis de Cergy en France. आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। हिंदू पंडिता एवं चिकित्सक हूँ मैं Cergy, France से। My video will be as usual starting in English, then in French and then in Hindi as usual. Comme d'habitude, mon vidéo va être d'abord en anglais, ensuite en français et pour terminer en hindi. आपको मैं बता दूं कि जैसे आप जानते हैं, जो लोग मेरा साथ देते हैं, मेरा वीडियो पहले तो इंग्लिश में होगा, उसके बाद फ्रेंच में और उसके बाद हिंदी में। Welcome to all of you. I hope that you're all doing well and that you're taking good care of yourself, I know. And many people have taken up work, so loads of courage to all of you. And thank you again for all your messages, for all your warm wishes that I'm still getting. As you know, during the whole month of May, I'm celebrating my 40th birthday, so I'm still getting loads of messages from all of you, encouraging messages when you're watching the video and live and then later on YouTube. So I want to thank you very much from the depth of my heart, and thank you for always being an encouragement and also an inspiration. As you know that all that I try to share is the little knowledge that I have acquired from my parents, from my guru, as a Hindu priest, therapist, and as a woman, obviously, as a mother, as a sister, and I try to share that little knowledge with all of you because, as I keep on saying, that we keep on learning lifelong, so learning doesn't stop here. So whatever title we have, as a doctor, as a pandit, as an acharya, as a psychologist or sexologist, or any title that we have, we should always be humble because we keep on learning all through our life. And today we are, as usual, going to do the Gayatri mantra and Mahamrityunjay mantra. Alongside, we'll do a Shiv Stuti and a Shiv Bhajan. So I hope that you will join me all through along this video. And as usual, we'll be talking today, I said, I'll be talking on the importance of water that we use to purify ourselves in Hindu culture especially, and to purify everything that is in our day-to-day life and the goddesses. So as usual, don't forget, if you think this video would be fruitful to someone, to share it on later on YouTube. If you're watching right now, leave a message. If you'll watch later, don't forget to leave a message. And also don't forget to send me your personal messages. I'll be very happy to know how you felt, also like a commentary, how you felt during this session and when you watch it, or what's your question, or what you want to say. So I'll be very pleased to listen to you. And at the same time, in a few minutes later, I'll be, after talking in French and Hindi, the same thing, because many people who are watching this video of Indian diaspora, many people unfortunately do not understand English. In India, for example, not everyone understands English. So many people listen to us, and I'm very pleased, and I humbly say thank you to all of you. We have many people in France that don't understand English and Hindi, so my motto is so that I can share what I'm doing with each and every one. And many people don't understand Hindi of Indian diaspora, like people in Suriname and all that. Mostly people there of Indian diaspora, unfortunately, in New York and all that, they don't understand Hindi. So it's a way to share what I have to say, my point of view. With the grace of God, I try to express myself in English, French and Hindi. These are not my mother tongue because I'm born in Mauritius. I did my
studies in India, and now I'm living in Paris. But my mother tongue is Bhojpuri, and in Mauritius we also talk Creole. So English or either French and Hindi is not my mother tongue. We have learned it, and it's in our culture. So I try to my best to share my point of view, the way I try to express in these languages, very humbly to all of you. So as usual, I wish you all a very happy birthday if you're celebrating your birthday or wedding anniversary or celebrating a wonderful event. At the same time, I send loads of love, loads of blessing, and loads of sympathy to all those people who are in a difficult situation, or you have lost a family member, or you had an accident, or you have lost your job. And during this problem time, we are having all so many difficulties. So I'll send you loads of love and loads of sympathy, and may Bhagwan, God, give you loads of courage. And today we are going to talk about the importance of water. And in the start, I said we are going to do a Shiv Stuti. As you know, Shiv Bhagwan is seen as a great yogi. He is always in deep meditation. We see him as a great dancer. We see him as a great Tantra yogi. And with his consort Parvati, they are here to bless us. In our Hindu culture, he represents the one among the three Murti, the three main trinity, that is Brahma, Vishnu, Mahesh. So Shiv Bhagwan is also known as Mahesh. And he is also known as the great cosmic dancer. Always in meditation, encouraging us about to have a balance in our material, physical and emotional, as well as spiritual life. So we are going to invoke the power, the divine energy of also alongside with all the god goddesses of Shiv Bhagwan today. Talking about water, we are all made of water, because around 75 to 90% of our body is filled with water, and the earth itself is covered with around 70% of water. The rhythm of life itself is dictated by water. And water, we see it in solidified form in the glaciers, we see it running in the rivers, floating in the clouds, then it falls as the sacred rain, and then we get that water to drink. So water is very important. At the same time, water can be seen as the nerves and the veins going towards the heart. That is, the rivers and the lakes and the rivers representing the nerves and the veins, and going toward the river, that means going toward the ocean. And the chemical structure of living water is a hexagon form of H2O. It's a hexagon form. And scientific has also observed that when the water is dead, when there is no life in the water, there is no hexagon form. So a living water has a hexagonal form. And water at the same time has memory. And human consciousness has a great effect on this molecular structure of water. Well, we can see that spiritual people around the world, all the countries, in many cultures, water has a great importance. It is always revered, and at the same time it is used for purification and blessing. When we talk about Hindu culture, we Hindus or people who have just joined our Hindu culture, have just become Hindus, or who are attracted to our Hindu culture, who love this Indus Valley civilization culture, we are known as the people of the land of the 7 sacred rivers. At that time, people used to believe in each and everything, respecting each and everything, all the elements. If you have a guru, then you have someone else has a different guru. It's still today in our culture. We have different gurus, but still we call it Hindu culture. We don't name it a new culture via the guru. And that's the beauty of our culture. We doesn't have a specific person that we revert to, that we venerate, that we pray.
And the land of the 7 rivers, the sacred rivers, are known as the SATSANG. Our sacred books in the Rig Veda, it is mentioned that this land, where in India it was called the SATSANG. As in many culture, in Hindu culture also, water is essential for cleansing ourselves, for cleansing our surrounding, our house, and also for puja, for Hindu rituals and prayers. We Hindus, we believe in physical and spiritual cleanliness and well-being. They play an important role in our day-to-day life. Sacred river like the river Ganga in India is believed to be the utmost sacred river. And alongside to river Ganga, Ganga Nadi, so many other rivers in India are greatly revered, and we take a dip in the river to purify ourselves. And especially that's a whole life wish for most Indians, most Hindus around the world, also of Indian diaspora, to at least have a dip in immersion in the Ganga river. And when we die, we pray that at least if it's possible, we could then put our ashes, someone put our ashes in the pious Ganga river. Well, before using the water, we pay respect to the water. That's how we do it in Indian culture. Respect it. We use a mantra to invoke the blessing of the SATSANG when we're going to start a prayer, or in our daily routine also. We think about the 7 sacred rivers and the water that is coming to our house, and then we use the water to purify us by sipping the water from our right hand. When we do the prayer or our daily prayer, we sip the water from our right hand, and that is called an achaman. And also when someone is coming at our place, what I do myself, that what we do in my place in Mauritius also, when someone is coming, when you're entering the house, we rinse our hands a little bit and we sprinkle a little bit of water on ourselves. We always have a tap outside the house. Also here in France, I do have that outside the house. Or if you have a guest is coming, you can't oblige them that, okay, put some water on you. They are different culture, like my in-laws, they are French, they don't know about that. So what I do, I welcome them. I sprinkle water, you know, the vessel that we use that in puja when there are so many people, like or in wedding. I put a few drops of Ganga Jal in that, of the holy pass Ganga river water, and then I put normal water, I do a mantra, and then I sprinkle on the people that comes at my place. I also do that with everything that I buy, whether it's my clothes, whether it's my food, with all the things that I do the pavitram, I purify them before using them. So you can do that also, and I know many of you who already do that. So, well, in our Hindu culture, we also do that. And when we are taking blessing from someone, that person sometimes sprinkle water to give us blessing, and at the same time sometimes use flowers, and which touch our different body parts with water to purify us. We call it angarsparsh. We purify all our place and surrounding by mixing different dravya, different nutrients, element in that to purify our surroundings. Sometimes we put turmeric powder, and sometimes so many other things, and especially the place where we are going to do prayer. Although we have cleansed that place, we still sprinkle water before doing our prayer, our puja. And we sprinkle water on the food that we are eating in front of a picture, an idol of God, when we are doing our prayer, and we offer this food to God. When we sprinkle water on it, sometimes we put tulsi leaf and Indian basilic leaf to make it more pure and sacred, and that is known as a prasadam, as a blessed food. So while doing all that, we sprinkle water, we say a mantra, and then it becomes
prasadam, and we share it with everyone. We eat it and share it with everyone. Water we also use to cleanse the deities, the goddesses, idol that we have. We use water for that, and we add several nutrients in that, several dravya in that, like I say, turmeric and all that. We also do that, and we call that the Jal Abhishek when we're using water, or when you're using so many other elements, we say it an Abhishek. So you already know, and whatever I'm saying, whatever I tell you, I share with you, whether it's a moral value tips or a health tips, I say it with great humility and respect to all of you, because most of you already know it, but my point of view is to share it with people who don't know. And well, we do the Abhishek to our God with milk, honey, and so many other things. And before starting a meal, we sprinkle water around our food 1 time, sometimes 3 times. We sprinkle water also to purify. We think of the mantra, and we sprinkle water. We respect the food that we are eating, because in Hindu culture we consider the body as a temple. And whatever food you're having, I would request to all of you, whether you're having your food at home or outside in a restaurant, no matter, especially in a restaurant, you should be very more careful, because so many people are touching that food and the energy that is in that. So you should purify it. You just take a little water, you ask for a glass of water, or you bring your water together and you sprinkle on your food. You pay your respect to your food, and then you eat. And don't feel ashamed. If you are a Hindu, don't feel ashamed to do your ritual, because each of our ritual has a scientific reason. And when we sprinkle water, first of all, it's to purify the surrounding. In the ancient times, because our people were eating on leaves, so what we used to do, it was rinsing our hands, because we eat with hands. And then it was to put water around the food also, so that insects and ants and all that, they don't come around. And above all, also to pay respect, to purify the food. And water is very important in Hindu culture, because early in the morning, after having our shower, we pay respect to sun god, to Surya Dev, and we offer a glass of water, and we call that arghya. So that also we use water in veneration of the sun god, and we do that daily. And when the water we are offering to God, it doesn't have to stumble, it has to fall straight. Why? It's not only because it's a tradition, it's a parampara, but when the water falls straight, the sun rays touching the water gives it a rainbow color, and that is very beneficial to our health also. So all that have a specific reason in our Hindu culture concerning yoga and Ayurveda. And we offer water with hands also. When we offer water with hands, that is called Jal Anjali. And when we submerge ourselves in water, in rivers and all that, to do prayer or to offer water, that is called a Jal Divasam. And we fast on water. We Hindus, we fast on water also. We fast about eating many Hindus are also non-vegetarian, so they fast on being vegetarian. Many fast on eating not eating salt or sugar or something like that. Many fast on eating vegetables, and many people fast, like when I fast, most of the time I fast on water. So we drink water only, and that is called Jalashi. And we chant mantra by standing in water, that is called a Jal Japam. Sometimes you can see a Hindu standing in a river and doing a prayer or chanting a mantra. So he's doing she's doing a Jal Japam. And in Ayurveda, using water to heal ourselves, it's called Kal Chikitsa, and that is water therapy, which has been practiced for centuries in our Hindu culture. From birth till death, water rituals play a very important role in our Hindu culture. Like when the child is born, the mother and the child, they have to take specific bath with Ayurvedic herbs. The child itself has a first bath,
and later we have him bath with a little bit of turmeric water and all that. And women having their menses every day when they're having their shower on and off, they are advised to rinse themselves with Ayurvedic herbs and water or turmeric water. So that is very beneficial for cleansing the pores. And because when we have our menses, ladies, you know that we have sometimes a bad odor that comes from our body. There's loads of perspiration also, and also sometimes the mouth is we are having a bad feeling in the mouth and all that. So cleanliness is very important also in when we are having our menses, and rinsing ourselves with turmeric water or Ayurvedic herbs is very beneficial at the same time and soothing. The 5 elements of nature that we call Panch Mahabhut in Hindu culture, that is water, fire, air, ether, that is the sky, and earth. So in all that, water symbolizes fullness and life in our Hindu culture. We respect water because we call it the elixir of life. We call water Amrit also. The taste of the water is attributed to water because we can taste it. The space is for the sound, and the air is for the touch. The fire is the vision, and the earth is the scent. So water is taste is attributed to water. So that's why when we eat something and all that taste, we know that it is attributed with water. And water is linked with the mind, with the manas, and which is superior to senses, and in matter of perception and inference, that is the source of knowledge. And also there is a specific mantra where we say that from food come well-being, come health, and food is produced by rain. So if there's no rain, that's why we respect each and every being and living things in Hindu culture. And if there's no rain, there's no water. And from sacrifice, that is when we are doing sacrifice in our daily life, being conscious about environment, when we are doing yaj, when we are doing puja, and then rain arrives. And at the same time, a sacrifice is born out of our action. So rain is intermediate of food and yaj, and it's very important. There's a wonderful mantra which said, Anada bhavanti bhutani parjanya danna sambhavaha yajjata bhavati parjanya yajja karma samudbhava. That's what I've been saying, that food comes from health. It gives us health, water, and water is very important for all of us, and especially in our Hindu culture. In our sacred text, the Rig Veda, as I have said, you already know, we have 4 Veds, and we have so many sacred texts, but the most main, the very oldest are the 4 main Vedas: Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, and Atharva Veda. So Rig Veda, there is great respect to Varun. Varun, which is referred to as the god of the sea and the rain. That's why many prayers we say Varunaya Namaha, Varunaya Swaha. So, and I'm very blessed that my parents have put my name Varuna. And as we say in Hindu culture, when you put a name to your child, that makes effect on that person, how that person is going to be, how that person is going to refer. And yes, Varun in our Rig Veda is referred to as sea, the ocean of sea and water, and it is associated, Varun Dev, the goddess of sea, of water, is associated with the truth and with justice, that is with Satya and Rita. So also in Vedic texts, we identify that we have to wash ourselves with water, and what we do when we wash ourselves, also we wash our sins and we attain salvation. Indian rivers are also associated. When we pray and we think about the Indian rivers, we invoke them in our prayers, and we invoke the water where we are. They are associated with the birth of great heroes in Indian culture, like Krishna, like Karna, and so on.
And the mostly revered river Ganga, which is mostly revered in India, around the world, those people who believe in Indian culture, it is symbolically, it represents liberation and liberating consciousness, and that also represents that how it flows from the head of Shiv, which represents the spiritual teacher and purifies everyone who comes in contact with it. So you can see Bhajan-Shiv, Lord Shiv, has a jata and his head, and then water flows from that, Ganga flows from that. There's loads of story about how Ganga was brought on earth by Bhagirathi and all that, so you can read about it. And in Hindu culture, we have always believed that water is alive. We consider it like a living entity. It has a consciousness and it has a memory, and it conveys information and response intimately to human communication. And from birth till death, we have many rituals that we do, which is called the solar sanskar. And also from birth we do that, and also before marriage we purify ourselves with water, or with turmeric water, with milk and all that before we get married. And when we are going in our student life and we are taking the celibacy vow, we do the Janev sanskar and all that. So also the boys, they shave their heads to do this sanskar, this ritual, and they are cleansed with water and with different herbs water. So it's a way to purify ourselves in our Hindu culture. We also use water to take a vow. When we are taking a sankalp, we are making a promise, something. We take water in our hand in Hindu culture to take a vow. We take water before giving charity, whatever we have by to give charity. We sprinkle a little bit of water before giving that charity, that danam. And we give blessing with water. And also if someone was very angry, you have disturbed that person, they also give you a curse by using water. All that is in our Hindu culture. And when we take our morning bath, we take our pratah snan, which is considered extremely auspicious, as it is very important because it revitalizes the body and it removes all kinds of negative influences. And so that's why we take a bath before doing anything, our puja, before practicing yoga, before having our breakfast. So we take a bath, we cleanse ourselves, we purify ourselves before doing anything or taking anything as eating or drinking something. And so from birth till death, water plays a very important role in our Hindu culture. We do the 16 main rituals, the solar sanskar, and the solar sanskar are done before birth. Yes, when you are planning to have a baby, you're thinking about the conception of the baby, so everything is planned because it's a desired baby. So we do a sanskar. So before the baby is done itself, we do a sanskar so that we are planning to go to have to go in our marital life and have a baby. So we do a sanskar, we do a prayer by using water also. All the sanskar, all the rituals are specific in different parts of our life, in different age of our life. Like there are four main category of that we have to live our life. It is said by our yogis, but by our Rishi Muni, that there is the brahmacharya ashram, that is of celibacy. You're a student, you learn everything, and then you go in the family life, in the marital life, the grihast. And then you become a vanprasti. When your children have become they have studied, now they have stand on their own feet, then you become a vanprasti, that you become grandparents. You go more in social get-togethers and you do more prayers and all that. And after that, it is also advised to take sannyas. What is sannyas? Sannyas means to detach yourself from each and everyone, to acquire spiritual knowledge and to share also. So you live like a water, and each step
in our life is like water which flows like a river. So that's why we build cities around rivers, to cleanse, to play, to drink, and to pray also. And we cannot live without water. In Hindu culture, we don't take water directly from the tap. Many people do it nowadays, unfortunately, but in my family or myself, I don't do it. We don't drink water directly from the tap. We are careful about that because it has come from so many places. It has acquired so many negative energy while coming towards us. So that's why we store it in a vessel. And mostly if you have an earthenware vessel, it is much better, or you have a jug, or you have a copper vessel. It's good for our health. So in ancient time, people used to do that, and they also used to put a flower on the water vessel in sign of respect, so that we have bring the water in our home, may it brings us prosperity and positivity. And if you are doing it, I'm very happy because I do it. If you have forgotten about that, so that's why I'm sharing it with you. Try to do it. At the same time, we have water plays a very important role in our Hindu culture in the time of death. So it plays a significant role in death. We bath the person when the person is dead before putting fire to the body, and then we prepare for the last travel. So that's why we give a bath to that person who is dead. We purify that person. We make him or her wear new clothes, and we put a few drops of Ganga Jal, of holy water, in the mouth. And that's how we prepare the person for the last travel. And because we believe in reincarnation, so it's like a travel to us. We have taken birth, we have lived, and we are going away to take a new life. And when the person is dead, we take the ashes of the person, and we disperse it in the river, and that is called the Asthi Visarjan. That is, the body is born out of element, and it again goes to all the elements. And coming from cremation, we purify ourselves in respect for the person, and obviously that is dead, the person that is dead. And also we have a bath. We clean also the house where the person is dead, and we purify everything. There is the triple purity in Indian culture. We say that water purify our thoughts, our words, and our actions. At the same time, when it comes to Ayurveda, when it comes to health, we have the last finger. This finger, the last finger, because each and every finger represents an element in our body. So the last finger represents the water element. And it is very important when we do meditation, we mostly do like that. But if you can do with each and every finger, that will balance all the elements in your body. And when we do the water mudra, that is called Varuna mudra. So Varuna mudra, we do it like that to balance the element of water in our body. And if there is too much water, then we do the Jal Vardhan. So in yoga, we do that mudra to balance water element in the body. And in Ayurveda, it is suggested that to drink water first thing in the morning, to drink 2 free glasses of lukewarm water in the morning, to flush the toxin above all in our Hindu culture, and at the same time to clean your body, your intestine. So not only the external cleansing, we give respect to water for external cleansing, but internal detox and internal cleansing is also given great importance in Indian culture. Mostly hot water has healing powers, has healing properties, and it helps in digestion, and it helps in so many things. So water is here to cool ourselves also, and to balance the 3 dosha in our body, that is Vata, Pitta and Kapha. And that is what we eat, and what heals us, and what we taste. So to balance the Vata, Pitta and Kapha in our body. Vata is also the air and space in the body. Pitta is fire and water, and Kapha is earth and water.
So water has a very important role in our Hindu culture. I hope that what I have shared with you has bring you some enlightenment about water in our Hindu culture. And don't forget that after this meditation session, drink a glass of lukewarm water to cleanse yourself, purify yourself internally, and to detox yourself. And also don't forget to share the video. Now we are going to start our meditation. And then I will say the same thing in French and Hindi, so do stay with me. You are going to inhale through your nostril, sit in a relaxed posture, and exhale through your mouth. You're going to do that 3 times as usual. You are going to think of each and every part of your body, paying salute to Mother Earth, Bhumata, respecting your Guru in your heart, respecting me in your heart. Invoke all the divine energy, especially Bhajan-Shiv and Shakti today. Think about all the divine energy, ask them to protect you on a protecting shield of divine energy. I'm sending you my divine blessing as a priest, a therapist, as a Reiki master. I send you this divine blessing to heal you, bless you, and purify you. Think about all your family members, of your dear ones, close friends. I think about my parents and brother, Ranveer in Mauritius, all my family friends in Mauritius and France, my brother Ranveer, especially my husband Sebastian and my son Kalyan, 4-month-old son Kalyan, and all my family and friends in France, in Mauritius, in UK, India, around the world. All of you watching the video, all of you, those who will be watching or listening later. Let's think about these people celebrating a wonderful moment today, and loads of sympathy and blessing to all those who have lost a dear one or in a difficult situation. Let's think about all the living beings in the earth, on the earth, in the air, in the galaxy, all the plants and animals, each and every one, and let's surround the earth in a protecting shield of positiveness. Loads of courage to all those who are going back to work. Loads of courage to people who have lost something or lost their work. Hope that you find a way. Our blessing, my love, blessing to you, and gratitude also. You're going to sit like that in a few minutes, and then during the time I say what I have to say in French. So stay with me. Bienvenue à vous tous, encore une fois. Et aujourd'hui, on parle de l'eau. L'eau, c'est la vie. Pour nous tous, on va d'abord, bien évidemment, commencer par le Gayatri mantra et le Mahamrityunjay mantra. Aujourd'hui, on va faire le Shiv Stuti. On va penser à Bhajan-Shiv, Dieu Shiv, Shakti, et ensuite on va faire un Shiv Bhajan. Donc j'espère que vous allez bien. Je profite de l'occasion aussi pour vous remercier de tout mon cœur pour tous vos messages que vous m'envoyez encore et encore quand vous regardez les vidéos, et aussi les messages d'anniversaire que vous m'envoyez encore, parce que pendant tout ce mois de mai, puisque j'ai eu 40 ans récemment, donc je suis en train de faire cette méditation guérison pour nous tous. Et pendant tout le mois de mai, à des dates spécifiques, je suis en train de faire cette méditation guérison. Donc je sais que vous êtes avec moi et vous allez rester avec moi encore aujourd'hui. Donc je vous remercie infiniment pour tous vos messages. Et aujourd'hui encore, si vous pensez que cette vidéo va apporter de la positivité à vos proches, n'hésitez pas de le partager après sur YouTube. Si vous me regardez en ce moment, laissez-moi un commentaire. Ou si vous regardez après, laissez-moi un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez des questions sur la santé ou sur la culture hindoue, ce serait avec une immense joie que je partagerai mes connaissances que j'ai acquis avec mes parents, que j'ai acquis avec mes gourous jusqu'à maintenant. Même si j'ai un titre en tant que pandit, en tant que prêtre ou thérapeute ou maître de Reiki,
Je suis d'abord une femme, je suis d'abord une mère, une maman, je suis d'abord une sœur. Donc, et pour moi, personnellement, je pense que beaucoup d'entre vous le pensent aussi, qu'on n'arrête pas d'apprendre. Donc, on apprend tout le temps, même si on est un psychologue, on est un médecin, on est un prêtre, on est un charien. On sait qu'on doit toujours avoir de l'humilité et on doit toujours continuer à apprendre, mais en même temps de partager ses connaissances. Dans toutes mes vidéos, j'essaie de vous partager des astuces de bien-être ou de savoir-vivre, les connaissances que j'ai avec vous. Et évidemment, aujourd'hui, on va parler de l'eau. Pourquoi on se purifie dans l'hindouisme et pourquoi on purifie d'autres choses dans l'hindouisme. En commençant par souhaitant bon anniversaire à tous ceux ou celles qui célèbrent leur anniversaire, ou si vous êtes en train de célébrer un anniversaire de mariage ou quelque chose de spécial, mais beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions et de sympathie à tout le monde qui sont en train de souffrir peut-être en ce moment. Si vous avez perdu quelqu'un, vous avez des difficultés au travail, vous êtes dans des moments difficiles, donc je vous envoie beaucoup d'amour, de bénédictions. Et je remercie tout et chacun, tous les gens qui sont en train de travailler aussi en même temps, qui sont toujours avec moi. Je vous envoie beaucoup de gratitude, je vous remercie de tout mon cœur. Et bien sûr, n'oubliez pas de boire un verre d'eau après cette session de méditation et de continuer de faire votre mantra japam, vos mantras au quotidien. Et bien évidemment, je fais ces vidéos en anglais, en français, en hindi, parce que dans l'hindouisme, bien sûr, on parle le hindi, on parle le sanskrit, en Inde, il y a beaucoup d'autres langues. Moi, malheureusement, je parle que le hindi, le bhojpuri, le sanskrit, en tant que langue indienne. Mais puisque je suis née à l'île Maurice, ma langue maternelle est le bhojpuri et le créole. Donc le hindi, l'anglais et le français n'est pas ma langue maternelle. J'essaye de parler en anglais, j'essaye de parler en français, j'essaye de parler en hindi, mais ce n'est pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle est le bhojpuri et le créole de l'île Maurice. Donc je suis née à l'île Maurice et j'ai grandi en Inde, j'ai fait mes études surtout en Inde et là je vis en France, donc j'essaie de partager mes connaissances avec vous. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'envoyer des messages. Et pour vous rappeler encore une fois, mes consultations gratuites, toutes mes consultations, tous mes cours, tous mes prières sont gratuits. Ils vont recommencer en septembre. Et je prends que des offrandes, j'ai pas de tarifs. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, vous prenez combien? Donc avec beaucoup d'humilité, vous donnez combien vous pouvez. Donc après, mes consultations vont commencer en septembre. Donc parlons de l'eau aujourd'hui. L'eau, comment elle est bénéfique pour nous, ça vous le savez déjà. Mais dans l'hindouisme, pourquoi je partage ces connaissances avec vous? Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, peut-être qu'ils ont oublié, ou ils sont nouveaux à la culture, à l'hindouisme. Donc l'eau rythme notre vie au quotidien. Le corps même, il est rempli d'eau, de environ 75 et 90%. La terre, elle est couverte d'eau, environ 70% de la terre est couverte d'eau. Et l'eau, on le voit en forme solide dans les glaciers, on le voit dans les rivières, on le voit flotter dans les nuages, et aussi on le voit tomber comme l'eau sacrée en forme de pluie. Alors l'eau, on peut le voir comme le nerf et les veines qui sont en train d'aller vers le cœur. Donc c'est les rivières, les lacs, tout ça, ils sont représentés comme les nerfs, comme les veines. Et le cœur est représenté comme l'océan. Et comme vous le savez, la structure chimique de l'eau est vivante. Et quand elle est vivante, on le voit comme en forme d'hexagone. Et cette forme, on ne le voit pas quand l'eau est morte, quand il n'y a plus rien dans l'eau, il n'y a pas de vitamines, il n'y a rien. Donc l'eau, il n'y a pas cette forme hexagonale. Et l'eau a beaucoup de mémoire aussi. Et il a ce mémoire par rapport aussi à la conscience humaine. Et cette conscience humaine qu'on a, ça fait l'effet, pas sur la structure chimique, mais sur la structure moléculaire. Donc c'est pour ça on lit des mantras, tout ça, quand on prend l'eau dans notre main ou on attrape une bouteille. Donc on dit que nos pensées, ça fait un effet sur l'eau.
Donc, dans le monde entier, dans différentes cultures, les gens qui sont spirituels, qui sont religieux, à travers toutes les cultures dans le monde, on voit que l'eau est vénérée. On l'utilise pour se purifier et en même temps, on l'utilise pour donner de la bénédiction. Nous, les hindous, on est considérés comme les peuples de 7 rivières sacrées qui est en Inde. Et il y en a des rivières qui n'existent plus maintenant, comme Saraswati. Donc, on est considéré comme le peuple des 7 rivières sacrées. C'était un peuple où on croyait dans la spiritualité. On n'avait pas qu'un seul gourou, on n'avait pas qu'un seul dieu. Donc, la mère pouvait croire dans un dieu ou avait un gourou, le père avait un autre. Donc, chacun avait un gourou, un dieu spécifique et croyait dans des énergies spécifiques. Même aujourd'hui, en tant qu'hindou, on est comme ça. On est comme les doigts de la main, mais on ne peut pas dire qu'on a un dieu spécifique ou on a des gourous spécifiques. Et par rapport à ça, même si on a tout ce panorama, je peux dire, d'énergie, qu'on y croit, donc spécialement, on est considéré comme hindou. On ne va pas par rapport à un gourou, on va créer une religion, par rapport à un dieu, on va créer une religion, mais bien sûr, les gens qui croient dans des dieux spécifiques, on le met dans une catégorie, mais il y en a qui croient dans tous les dieux, comme moi. Donc, spécialement, on n'a pas un thématique, on se considère tous hindous. Et il y a beaucoup de gens de diaspora indien qui sont à l'île Maurice, qui sont en France, qui sont au Suriname, qui sont partout dans le monde. Donc, c'est pour ça que je fais mes vidéos en anglais, en français, en hindi, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas français, qui ne comprennent pas hindi, qui ne comprennent pas l'anglais. Donc pour les gens qui n'arrivent pas à comprendre ces langues, moi je peux m'exprimer en anglais, en français, en hindi. Je ne peux m'exprimer couramment, je fais des efforts parce que c'est pas ma langue maternelle. Donc j'essaye de partager tout ce que j'ai à dire avec vous dans ces 3 langues. Alors en même temps, dans la culture hindoue, l'eau est considérée très sacrée. Elle est essentielle pour se nettoyer, nous-mêmes, pour nettoyer notre entourage, mais surtout pour les rituels hindous, pour les pujas. On croit dans le bienfait de l'eau qui nettoie le physique, qui apporte une purification spirituelle et en même temps nous donne de la santé. On respecte tous les rivières, tous les éléments, tous les êtres dans l'hindouisme, mais surtout la rivière Gange est très vénérée dans l'hindouisme et très sacrée parce qu'il est considéré d'avoir des pouvoirs spirituels qui nous nettoient, qui nous purifient, qui nous bénissent. Mais il y a beaucoup d'autres rivières en Inde qu'on vénère, qu'on y croit et qu'on utilise. Et tous les hindous, chaque hindou, il croit toujours, il se dit toujours si une fois au moins dans ma vie, parce nous on n'habite pas en Inde, on est soit à l'île Maurice soit en France, il y a beaucoup de personnes en Inde même, ils n'arrivent pas à aller au Gange, donc au Ganga, au rivière Ganga, donc on se dit si une fois au moins dans notre vie, on peut aller faire une immersion dans le Gange avant notre vie, on est libéré, on se sent purifié. Et bien évidemment, la rivière ultime est considérée, c'est le Gange, mais on a aussi beaucoup d'autres rivières qu'on vénère. Et avant d'utiliser l'eau dans l'hindouisme, on le prend avec beaucoup de respect. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lit un mantra, surtout on est en train d'aller faire le puja, la prière. Donc, on va lire un mantra, on va invoquer les 7 rivières sacrées. Parce qu'on est considéré comme le peuple de 7 rivières sacrées, les SATSANG. C'est pour ça qu'on nous appelle les hindous. En fait, c'est les SATSANG. Mais avec le temps, comme les Arabes, comme les Européens, ils n'arrivaient pas à dire Sindhu. Ils nous ont dit hindou, hindou. Donc aujourd'hui, on nous appelle les hindous. Mais à la base, on est les peuples de Sindhu, de 7 rivières. Et on utilise l'eau pour se purifier. Quand on fait le puja ou au quotidien, on est en train de se purifier, on prend l'eau dans la main droite et ensuite on va le boire et on appelle ça le achamanyam. Et on utilise de l'eau dans différentes parties de notre corps pour le purifier, on le touche sur différentes parties de notre corps, on appelle ça le anga splash. Donc l'eau on l'utilise pour boire, mais quand on prend sa douche aussi, on pense à tout
l'eau à toutes les rivières, à tout l'eau pour le bénir, pour que ça soit sacré, pour qu'on puisse se doucher avec, pour qu'on puisse le boire. On purifie aussi la place où on est en train de faire la prière, même si on l'a déjà nettoyé, on a déjà passé la sablière et tout. Donc, même après, on le purifie en envoyant un peu d'eau, on va le purifier. À cette place, on va faire notre prière, notre puja. Et aussi sur tout ce qu'on mange, toutes les offrandes qu'on fait à Dieu. Des fois qu'on fait les offrandes à Dieu, même si on a mis un peu d'eau dessus, on met aussi une feuille de basilic sacré de l'Inde qu'on appelle le tulsi, et on met un peu de l'eau au lit des mantras, on le purifie, et après avoir fait la prière, ce repas qu'on a utilisé comme offrande de Dieu, ça devient un prashadam, ça devient un repas sacré, un repas béni, et on le mange et on le partage avec tout le monde. De l'eau est utilisée aussi, pas que pour se nettoyer, mais si on a des idoles, on a des statues de Dieu à la maison ou dans des temples, on le nettoie aussi, on le purifie, et on ajoute aussi beaucoup d'ingrédients dedans, beaucoup de dravya, par exemple du curcuma, tout ça, on utilise pour nettoyer les idoles. On utilise, ça s'appelle un jalabhishek si on utilise l'eau, et ça s'appelle un abhishek comme si on est en train de purifier les idoles avec d'autres choses, par exemple avec du miel, avec du lait ou avec d'autres éléments. Et aussi, avant de manger, avant de prendre son repas, les hindous, il y a beaucoup d'hindous qui le font, il y en a qui ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un peu d'eau autour de notre assiette. Auparavant, on mangeait sur les feuilles de bananier. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait un peu d'eau tout autour, on le faisait 3 fois. D'abord pour le purifier, ensuite pour se protéger des insectes, des fourmis, tout ça. Donc, on le faisait avant. Donc, moi, je voudrais aussi vous demander humblement, avant de manger à la maison, ou surtout aujourd'hui, on mange beaucoup dehors, dans des restaurants, tout ça. Donc, purifiez votre repas, pensez, même si vous ne connaissez pas les mantras, pensez à toutes les énergies, invoquez les énergies, purifiez l'eau, et vous pouvez emmener votre eau de la maison et bénir un peu le repas avant de manger, peu importe. Je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'hindous aussi ne sont pas végétariens, c'est pas grave, purifiez tout ce que vous mangez parce que vous allez utiliser ça comme offrande à votre corps. Notre corps est considéré comme un temple dans l'hindouisme, donc tout ce que vous allez manger pour que ça soit purifié, ça soit béni. Donc, pensez à purifier avec de l'eau, et même si vous êtes au restaurant, après, vous donnez beaucoup le respect au repas que vous allez manger, et ensuite, vous le mangez. Donc, n'ayez pas honte. Si vous êtes hindou, je vous demande humblement de le faire au quotidien, même si vous êtes dehors, soyez fiers que vous êtes hindou. Et aussi, le matin, quand on prend notre douche, après, on fait une offrande avec un verre d'eau au dieu soleil. On fait le arghya. Et pourquoi on fait ça? Ben, d'abord, bien évidemment, en vénération au dieu soleil, mais surtout quand on est en train de prendre l'eau avec... on est en train de le verser comme ça, soit avec, avec de l'eau. Donc, l'eau, quand il tombe, c'est pour ça qu'il faut faire bien attention que ça coule tout droit. Et à ce moment-là, quand les rayons de soleil ils tapent dans l'eau, ça fait les couleurs de l'arc-en-ciel et c'est très bénéfique pour notre corps et pour tous les chakras de notre corps. On offre l'eau aux dieux, déesses, à tous les éléments. On fait des offrandes avec l'eau, avec notre main, donc ça s'appelle un jalanjali. Et dans l'hindouisme, on fait aussi des carêmes sur l'eau, hein. On va boire que de l'eau, ça s'appelle un jalasi. Il y en a qui mangent que des fruits, il y en a qui ne sont pas végétariens, ils vont faire des carêmes en mangeant que végétarien. Donc on a différents types de carêmes, et surtout, moi je fais souvent avec l'eau, donc le jalasi, le carême avec de l'eau, on boit que de l'eau. Et peut-être en Inde, on le voit souvent, à l'île Maurice, mais ou peut-être en France, un jour vous allez voir quelqu'un, il est debout dans l'eau, il est en train de faire comme ça, ou est en train de lire des mantras. Donc il est en train de faire un jal japam, il est en train de lire un mantra dans l'eau, parce que ça on le fait aussi dans notre culture. Et dans l'Ayurveda, on appelle ça le Kalchikitsa, donc la thérapie de l'eau. Ça a été pratiqué depuis des millénaires dans l'hindouisme, d'utiliser l'eau pour la prière, pour se purifier et thérapeutiquement.
Et depuis la naissance jusqu'à la mort, on a des rituels avec de l'eau. Et c'est pour ça que l'eau a un rôle très important dans l'hindouisme. Depuis la naissance des enfants, quand il y a un enfant qui est né, la maman et le bébé on le dit de prendre un bain ou de prendre une douche, bien sûr avec l'eau d'abord, vous le faites aussi, mais surtout avec des herbes médicinales. On va se rincer avec ces herbes médicinales pour se purifier. Et quand on a ces règles, vous le savez, on a la bouche des fois qui se sent mauvais, ou on se transpire, on se sent pas bien. Donc c'est conseillé quand on a ces règles aussi de se doucher ou se rincer après avec de l'eau bénie ou avec de l'eau purifiée un peu. Si vous mettez un peu de curcuma dedans, de haldi dedans, c'est pour vous purifier en même temps, pour vous apporter beaucoup d'énergie. Les 5 éléments, les panch mahabhut, l'eau, la terre, l'espace, l'air et le feu. Donc, dedans, l'eau, il représente tout ce qui est complet, il représente la vie dans l'hindouisme. On respecte l'eau beaucoup parce qu'on considère que c'est l'élixir de la vie, c'est le amrit de la vie. Et l'eau est attribuée au goût, aux saveurs. Donc, l'espace est attribué au son, l'air, c'est le toucher, et la vision, le feu, ainsi que la terre, c'est l'odorat. Donc, l'eau et le saveur, ce qu'on mange, tout ça, tout est attribué à l'eau. L'eau est vraiment très connectée avec l'esprit, et l'esprit qui est considéré supérieur des sens, parce qu'on utilise notre esprit, c'est pour la perception, et ça nous amène de l'éducation, de gyan. Donc l'eau est connectée avec le manas, avec l'esprit. Et en même temps qu'on mange, tout ce qu'on mange, ça nous apporte de la santé. Et tout ce qu'on mange, ben, ça vient avec de l'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de la pluie, on n'a pas de la nourriture. En même temps, on fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de rituels, beaucoup de prières, beaucoup de yaj, pour qu'il y ait aussi la pluie dans l'hindouisme. C'est pour ça qu'on fait des pujas, on allume de feu, on fait des yaj, tout ça, pour qu'il y ait de l'eau, pour qu'il y ait la pluie. Et aussi, on fait beaucoup de sacrifices dans notre action aussi. Il y a un mantra qui est très populaire, qui représente tout ça, c'est Annada bhavanti bhutani parjanyadanna sambhavaha yajjad bhavati parjanya yajjaha karma samudbhava. Donc l'eau est intermédiaire de ce qu'on mange et de la prière, et c'est très important. Et dans le texte sacré, le Rig Veda, dans l'hindouisme, on a beaucoup de textes sacrés, on ne peut même pas le compter, mais les 4 primordiales, les 4 qui sont très importants sont les Rig Veda, Yajurveda, Samveda, Atharva Veda. Dans le Rig Veda, on invoque le dieu Varun. Varun est considéré comme le dieu de l'eau et de la pluie et de la mer. Il est associé avec la vérité et la justice, avec Satya et Rita. Et je suis très fière que mes parents m'ont donné ce prénom, Varuna, et on dit dans l'hindouisme qu'on réfléchit beaucoup à mettre un prénom à son enfant, parce que cet prénom, il va faire l'effet sur la personne. Et moi, je suis très fière que mes parents, je remercie mes parents même qui m'ont donné ce prénom, parce que Varuna représente l'océan et la pluie, et surtout la justice et la vérité. Dans les textes sacrés de l'hindouisme, on identifie l'eau pour se nettoyer, pour enlever ses péchés et aussi pour atteindre la libération divine. Dans l'hindouisme, on associe l'eau, les rivières avec beaucoup de respect, parce qu'il y a beaucoup de sages qui sont nés, beaucoup des héros, on peut dire des héros de l'hindouisme, comme Krishna, comme Karna, il y en a tant d'autres qui sont nés à côté de la rivière. Et la rivière la plus sacrée, comme vous le savez en Inde, dans l'hindouisme, c'est le Gange, le Ganga Nadi, le Gange, et ça symbolise la libération de notre conscience. Et on le voit que dans le dieu Shiv, puisque aujourd'hui on va penser à dieu Shiv, Shiv qui représente le yoga, qui est
grand danseur cosmique qui représente la méditation. Il est toujours en train de se méditer. Donc on voit que l'eau qui coule de ses cheveux, de son jata, c'est le Gange. Donc comment le Gange il a atterri là? Donc il y a l'histoire de Bhagirath, comment il a invoqué le Gange sur la terre et comment Shiv a attaché dans ses cheveux. Donc ça vous pouvez le lire aussi, vous le savez déjà. Donc Shiv, Dieu Shiv, Bhajan-Shiv représente le guide, le gourou spirituel, et il purifie tout le monde qui vient en contact de lui à travers cette eau. Et donc dans l'hindouisme on croit aussi que l'eau est vivante, et oui, on le respecte infiniment. L'eau, on dit que l'eau a une conscience, il a une mémoire, il partage l'information et il répond vraiment à la conscience humaine. C'est pour ça on dit nos pensées affectent l'eau. En même temps, avant le mariage, on a 16 rituels spécifiques dans l'hindouisme, dont le mariage. Avant le mariage, on se purifie avec l'eau, avec du lait, avec de l'eau qu'on a mélangée avec du curcuma. On se purifie avec. Quand on décide à faire ses études, il y en a qui le font encore, il y en a qui le font très peu. Mon frère et moi on l'a fait quand on prend notre Janev. Donc les garçons ils se rasent la tête, ils se purifient avec de l'eau, les filles aussi se purifient avec de l'eau. Donc ça s'appelle le Janev Sanskar. Donc on va prendre la corde sacrée qu'on met pour commencer à devenir un bon étudiant, un bon célibataire, et apprendre et valoriser la spiritualité aussi. Donc l'eau on le prend aussi dans l'hindouisme pour faire un vœu, et aussi qu'on est en train de donner des bénédictions. On peut donner aussi avec l'eau et en même temps avec des fleurs. Et quand on a décidé de donner de la charité, tout ce qu'on a acheté ou on veut donner de l'argent, on va le bénir un peu avec de l'eau. On va faire la charité, le dhanam, donc tout ce qu'on a acheté avant de donner, donc on le purifie. Et on donne aussi de la bénédiction. Et dans l'hindouisme, si vous avez mis quelqu'un en colère, surtout les rishis, les pandits, les yogis, tout ça, donc malheureusement, ils prennent un peu d'eau, ils vont aussi vous donner des malédictions, donc ça existe aussi dans l'hindouisme. Donc le matin, quand on prend notre douche le matin, le bain le matin, le pratasnan, c'est considéré très très bénéfique, d'abord parce que ça revitalise le corps, aussi parce que ça enlève toutes les influences négatives qu'on a acquis pendant notre sommeil ou pendant la nuit, et on le fait aussi pour se purifier avant de commencer notre journée, avant de pratiquer le yoga, avant de manger, avant de prendre un petit-déj. On nettoie la bouche, on se nettoie extérieur, et c'est très important. Donc depuis la naissance, avant la naissance et depuis pendant toute notre vie jusqu'à la mort, l'eau a un rôle très important dans l'hindouisme. On a aussi les 16 rituels très importants, les sola sanskars comme on dit. Les sola sanskars, ça commence déjà d'abord quand on a décidé d'être enceinte. On va faire une prière, ça s'appelle le Bhajan-Sanskar. Et cette prière, ensuite, on va décider à aller en relation avec sa femme ou son mari. On va décider de concevoir un enfant. Donc, tout est planifié. Même cette désir, elle est planifiée pour concevoir un enfant, parce qu'on doit concevoir quelqu'un qui est bien. On doit concevoir quelqu'un qui va apporter de la positivité dans la vie de tout le monde et aussi dans sa vie. Donc, on conçoit cet enfant. Donc, pour concevoir cette vie, on a une prière. Donc, avant de tomber enceinte, on fait une prière. Pendant qu'on est enceinte, il y a des prières qu'on fait. Après quand l'enfant est né, on fait des prières. Donc, les 16 rituels très importants dans l'hindouisme pendant toute notre vie. Et tous ces rituels, tous ces sanskars sont importants dans les 4 parties spécifiques de notre vie. On a 4 parties. On a la partie qu'on est célibataire, brahmacharya, la partie quand on se marie, le grihast. On a la partie quand on devient des grands-parents, on se détache un peu de la vie familiale, on se concentre un peu plus sur la vie sociale, à aider les autres. Ça s'appelle le vanprest. Et ensuite, on a une étape de notre vie, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. J'aimerais bien le faire moi un jour, de se détacher complètement de sa famille et de vivre comme un sannyasi, comme un swami. Ça s'appelle de prendre le sannyas. Donc à ce moment-là, on est détaché complètement de ce membre de sa famille. Des fois, on a des nouvelles, des fois, on n'a pas, parce que les enfants ils sont devenus autonomes. La famille, elle peut se débrouiller. Donc, on se détache, on va
aller vivre ailleurs dans des temples ou aller un peu partout dans le monde et propager tout ce qui est bien et en même temps partager les connaissances qu'on a acquis pendant toute notre vie. Comme une rivière qui ne reste pas au même endroit parce que si ça va stagner, ça va pas être bon, il va avoir des microbes dedans, il va pas être bon. Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait l'eau qui vient, il faut qu'il y ait la pluie qui tombe, donc il faut qu'il y ait cet renouvellement. Donc comme une rivière, notre vie, elle est aussi pareille, il coule comme une rivière. Et c'est pour ça, pas que dans l'hindouisme, dans toutes les cultures, on voit qu'il y a des grandes cités qui étaient bâties autour des rivières. Et c'était surtout pour se purifier, pour jouer, bien sûr, pour le boire et bien évidemment pour prier. Alors on ne peut vivre sans l'eau. L'eau est très importante pour tout le monde, mais aussi dans l'hindouisme. Et quand on prend l'eau dans l'hindouisme, on ne le prend pas directement pour le boire du robinet, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de rivière, on ne va pas chercher l'eau dans un puits, on le prend directement de notre robinet. Donc on ne le boit pas tout de suite dans l'hindouisme. On le garde, on le met dans un ustensile, si c'est possible en terre cuite, ou dans une carafe, ou dans une carafe de cuivre, et à ce moment-là on le garde dedans. Dans l'Antiquité, ou même aujourd'hui, il y en a beaucoup comme moi qui le font, comme ma famille qui le font, on posait une fleur aussi sur cet récipient pour le purifier en signe de respect aussi, parce que l'eau, il passe partout, dans tous les tuyaux, tout ça, il vient chez nous, donc on le purifie avant de le boire, avant que ça rentre dans notre corps. Et c'est un rôle très important aussi, pas que depuis la naissance, mais quand on est mort. Quand quelqu'un est mort dans l'hindouisme, on va le faire prendre un bain, on va le nettoyer pour le préparer pour le trajet ultime, le dernier trajet de sa vie. Et après que le corps est brûlé, parce que nous, on va incinérer le corps dans l'hindouisme, on brûle le corps, on va utiliser cette cendre, on va le mettre, on va le disperser dans la rivière avec beaucoup de respect, le cendre du défunt. Et en même temps, en retournant à la maison, en rentrant à la maison, on va penser en respect au défunt, on va se purifier, on va prendre sa douche, mais aussi pour se purifier, on va nettoyer aussi la maison où la personne est morte, on va enlever tous ses vêtements, tout ça, on le donne en forme de charité ou on le jette, il y en a qui le brûlent. Donc on fait tout ça pour se purifier. Dans l'hindouisme, l'eau est représentée comme une triple pureté en forme de pensée, en forme de parole, en forme d'action. Et l'eau est purificateur en même temps, il est donneur d'énergie et de positivité et il détruit tout ce qui est maléfique. Dans l'hindouisme et dans l'ayurveda et dans le yoga, l'auriculaire, le dernier doigt de la main, représente l'eau. Et oui, ce doigt-là représente l'eau. Et on a le mudra qui s'appelle le Varuna mudra pour représenter l'eau, pour canaliser l'eau. Quand vous faites la méditation, vous pouvez toucher tous les doigts de la main en méditant. Vous pouvez toucher cette doigt aussi à ce moment-là, méditer un petit peu pour canaliser l'élément de l'eau dans votre corps. Si on a trop d'eau, on fait le Varuna Shamak Mudra, le Jal Vardhak Mudra, donc à ce moment-là, pour diminuer l'eau dans le corps, les gens qui ont des problèmes de gouttes, tout ça. Donc on parle de tout ça, l'eau n'est pas que vénérée, il y a aussi un côté thérapeutique qu'on utilise dans l'hindouisme. Dans l'ayurveda, on boit l'eau pour se nettoyer le matin, pour enlever les toxines du corps et en même temps pour se nettoyer les intestins. Et on conseille de boire l'eau à température ambiante au lieu de boire trop l'eau glacée, tout ça. En même temps, c'est bon pour la digestion, ça nous apaise et ça balance le Vata, Pitta et Kapha, les trois doshas dans notre corps. Les Vata, Pitta et Kapha, ça représente ce qu'on mange pour nous guérir et aussi pour le saveur. Donc le Vata représente l'air et l'espace, le Pitta représente le feu et l'eau, et le Kapha représente la terre et l'eau. Donc l'eau est très importante dans notre culture. Avant la naissance jusqu'à la mort, on utilise l'eau pour se purifier, pour se bénir et pour donner la bénédiction aux autres. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose, donc et vous allez le partager à tout et chacun.
ce vidéo si vous le pensez que ça apporte quelque chose pour vos proches. Et en même temps, donc on va maintenant commencer notre méditation. Ensuite, je vais parler en hindi pour que vous ayez le temps de vous canaliser votre énergie. Et en même temps, après, on va commencer notre méditation. Donc, on va inspirer par le nez, on va s'asseoir correctement, tranquillement. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. On va le faire comme on a l'habitude de le faire 3 fois. Ensuite, on va penser à toutes les parties de notre corps. On va saluer la terre, Bhumata. On va invoquer notre gourou. Vous allez me saluer dans votre cœur. Invoquer tous les dieux et déesses, et spécialement aujourd'hui, Dieu Bhajan-Shiv et Shakti. Vous allez leur demander de la santé, prospérité, tout ce que vous voulez, mais surtout de vous protéger dans une bulle d'énergie protectrice. En tant que prêtre, en tant que thérapeute et en tant que maître Reiki, je vous envoie mon amour, ma bénédiction et aussi ma gratitude. Pensez à tous les membres de votre famille, à tous vos amis, tous vos proches. Je pense à mes parents et mon frère Ranvir, à l'île Maurice, mes amis et proches à Maurice, ma famille aussi, en France, mon frère et toute ma famille, surtout mon mari, spécialement mon mari Sébastien, et mon fils de 4 mois, Kalyan. À tous mes amis et familles en Angleterre, en Inde, dans le monde entier, à vous qui regardez les vidéos ou qui vont regarder ce vidéo après, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions pour vous guérir, vous bénir, vous purifier et beaucoup de gratitude. On pense à tous ces gens qui sont en train de célébrer quelque chose aujourd'hui, un moment de joie, ou tous ces gens qui sont dans un moment de deuil ou qui souffrent. On vous envoie beaucoup d'énergie. On va penser aussi à tous les êtres, tous les éléments dans la terre, sur la terre, dans l'air, dans l'eau, dans l'univers, dans toute la galaxie, tous les êtres vivants, toutes les plantes, tous les animaux. On va envelopper la terre d'une énergie protectrice. Et on va penser à tout le monde qui sont en train de travailler aussi. On les envoie beaucoup d'énergie positive. Restez comme ça quelques instants, le temps que je termine ce que je viens de dire en hindi. Et ensuite, on va commencer notre méditation. आप सभी का हार्दिक अभिवादन है, जहाँ से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं। मैं फ्रांस से आपका साथ दे रही हूँ और उम्मीद है आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं। आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने संदेश भेजते हैं इतने प्यार से। और साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं, पूरे मई महीने ना मैं जो कि अपना 40वां जन्मदिन मनाई हूँ हाल ही, तो पूरा मई महीने सभी के लिए मैं ये स्वास्थ्यवर्धक ध्यान कर रही हूँ। सभी के स्वास्थ्य के लिए, सभी को सुख समृद्धि मिले, सभी के लिए ये प्रार्थना कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ आप मेरा साथ दे रहे हैं और कुछ तिथियों में मेरा साथ विशेष दीजिएगा। बाद में अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी के लिए लाभप्रद है, उसको ज़रूर बांटिएगा और वीडियो के अंत में एक गिलास गुनगुना पानी अवश्य पीजिएगा। आज जैसे मैंने अनगिनत बार कहा भी, इंग्लिश और फ्रेंच में अगर आप समझते हैं तो जानते ही होंगे, हम गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और शिव स्तुति करेंगे और उसके बाद एक शिव भजन। निसंदेह शिव भगवान जो है हमें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। वो योगी हैं, वो नृत्य करते हैं, वो ध्यान करते हैं, वो माता पार्वती के पति हैं। तंत्र योग हमें उन्होंने ही बतलाया और वो हमारे मुक्ति के साधन हैं और वो ब्रह्मा विष्णु महेश के संग संग हमारे जीवन में सुख शांति लाते हैं। तो भगवान शिव की आराधना हम करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आज हम जल के बारे में, जल किस प्रकार से, आप बहुत में से जानते होंगे कि जल हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारे हिंदू धर्म में हम किस प्रकार से जल का उपयोग करते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने इर्द गिर्द को पवित्र करने के लिए। तो साथ ही साथ जल जो है जीवन में एक जीवन का लय है, तो उस लय से पानी
जो है आता है, और जीवन का लय पानी से ही तय होता है। और लगभग 79-90% हमारा शरीर जल है उसमें, और लगभग 70% जल विश्व भर में है। और अगर हम देखें तो ठोस रूप में वो जितने भी ग्लासियर्स हैं उसमें हैं, वो नदियों में बह रहे हैं, और यही बादलों में भी है। एवं जब वो गिरता है बादलों से तो कितना पवित्र जल हो जाता है बारिश स्वरूप। पानी को हम अपने शरीर के तंत्रिकाएं और नसों के समान देख सकते हैं, जो जा रहे हैं हृदय की ओर। जैसे नदियां जाती है ना, और झरने नदियां जाती है समुद्र से मिलने, तो उसी प्रकार उसका संबोधित किया गया है बहुत कवियों ने भी, बहुत लोगों ने भी। उसका सांसायनिक संरचना, उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो जीवित पानी है वो एक शतभुज आकार में है, यानी कि हेक्सागन आकार में है, और जो मृत पानी है वो इस शतभुज आकार में नहीं है। पानी में, हमारे हिंदू धर्म में पानी में एक स्मृति है, एक मेमोरी है, उसमें मानव चेतना है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, और साथ ही जो भी हम सोचते हैं वो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, उसका आणविक संरचना में प्रभाव करता है। अब जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं या जितने भी लोग हैं विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों में विश्व भर में, वो पानी की पूजा करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, उससे शुद्धिकरण करते हैं, उससे आशीर्वाद देते हैं। हम जो सप्त नदी, सप्त ऋषि के संतान हैं, जिसको सप्त सिंधु कहा गया है, हम उसके वंशज हैं। विश्व भर में हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, और जो कुछ भी मैं अपने वीडियो में कहती हूँ उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं, क्योंकि देखिए मेरा जन्म मॉरिशस में हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच ये मेरी मातृभाषा नहीं है। मेरी मातृभाषा है मॉरिशस का जो भोजपुरी बोलते हैं, या मॉरिशस में जो क्रियोल बोलते हैं। तो मैं प्रयास करती हूँ हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच में बोलने का, तभी कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ। और मेरा जन्म अगर हुआ मॉरिशस में, तो मेरी पढ़ाई जो है मैंने भारत में किया। अभी मैं फ्रांस में मैं रह रही हूँ पति और बच्चे के साथ। तो देखिए कहाँ कहाँ से हम निकले हैं, विश्व भर में हम हैं ये हिंदू धर्म के अनुयायी। और इसीलिए जब हम अपने धर्म के बारे में सोचते हैं तो हम सप्त नदी, सिंधु नदी के बारे में सोचते हैं। इसलिए आज लोग हमें हिंदूज बोलते हैं, हिंदुइज्म हमारा कल्चर बोलते हैं, लेकिन सिंधु नदी के वंशज हैं हम। जो अरब्स थे, जो यूरोपियन आए भारत में, उन लोगों को पता नहीं था, ठीक से शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते थे, वो इस प्रकार से हमको संबोधित किया। इसलिए हमारे धर्म संस्कृति में ये गर्व है। हम किसी विशेष गुरु को या किसी विशेष भगवान को प्रतिनिधि करके अपना धर्म नहीं बनाते। घर में जैसे हम 5 उंगलियां हैं ना हाथों में, ऐसे होते हैं। कोई किसी भगवान की आराधना करता है, किसी का कोई उसका गुरु है, उसका अनुकरण करता है, तो परिवार का कोई और सदस्य किसी और को मानता है। इस प्रकार से हमारा हिंदू धर्म है, और इस पे हमें गर्व है, और हमें गर्व होना चाहिए कि एक गुरु को लेके या एक भगवान को लेके हम कोई धर्म नहीं बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम आध्यात्मिकता को अग्रसित करते हैं और इस पर ध्यान देते हैं। जैसे कि अलग अलग संस्कृतियों में और हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में हम पानी को बहुत महत्व देते हैं। वो बहुत आवश्यक है हमारे शरीर को स्वच्छ करने के लिए, हमारे घर द्वार आस पड़ोस को स्वच्छ करने के लिए, पूजा पाठ के लिए। साथ ही हम इस पर ध्यान देते हैं हिंदू धर्म में कि हमारा शारीरिक और हमारा आध्यात्मिक पवित्रता हो, और साथ ही हमें स्वास्थ्य मिले पानी से। आप जानते हैं भारत में सर्वोत्तम नदी हम गंगा माँ को मानते हैं। हालांकि इतने अनगिनत नदियां हैं, गंगा माँ को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि मानते हैं हम हिंदू लोग कि गंगा में आध्यात्मिक पवित्रता है। जब हम उसमें डुबकी लगाते हैं तो हमें मोक्ष मिलती है, हमें शांति मिलती है, पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जहाँ से भी है, हम भारत में हैं या मॉरिशस में, फ्रांस में, विश्व भर के जो इंडियन डायस्पोरा है विश्व भर में, हम यही कामना करते हैं कम से कम एक बार हमें गंगा में ये हमें
हम जा सकें, हम उसमें गोता डाल सकें, उसमें स्नान कर सकें, उसको प्रणाम कर सकें, और जब हमारी मृत्यु हो तो हमारी अस्थियों का विसर्जन गंगा में हो सके। तो ये हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और पानी का को हम बहुत महत्व देते हैं हिंदू धर्म में। जब मंत्रोच्चारण करते हैं, मंत्र को करते हुए हम पानी, जो सप्त नदियां हैं और जो जहाँ पे हम हैं उस स्थान के जल को हम आवाहन करते हैं, ताकि ये पानी जो हम उपयोग करने जा रहे हैं, हम छिड़क रहे हैं, सब जगह पवित्र हो। और उसी को जब हम अपने राइट हैंड में लेते हैं, उसको पीते हैं, तो उसको कहते हैं आचमन। अब जब हम अलग अलग अंगों को छूते हैं, आप जानते हैं हमारे शरीर में, उसको कहते हैं अंग स्पर्श। हम सब जगह को इर्द गिर्द जहाँ हम पूजा करने जा रहे हैं वहां पर, हालांकि हमने झाड़ू पोछा लगा दिया, फिर भी हम जल छिड़कते हैं उसको पवित्र करने के लिए। हम भगवान की मूर्ति है या भगवान की प्रतिमा है या पिक्चर है, तो उस पर भी हम जल छिड़कते हैं उसको पवित्र करने के लिए एक मंत्र के साथ। और जब हम भगवान को प्रसाद दे रहे हैं, जो भोजन हमने पकाया है या किसी को देने वाले हैं, हम भगवान को के सामने चढ़ाते हैं। ये चढ़ावे के ऊपर हम एक तुलसी पत्र भी डालते हैं, उसके ऊपर मंत्र के साथ हम थोड़ा जल छिड़कते हैं। तो पूजा पाठ के बाद यही भोजन एक प्रसाद बन जाता है, जो हम खुद सेवन करते हैं, दूसरों के साथ भी बांटते हैं। हम जल से देवी देवताओं का भी उसको हम पवित्र करते हैं, उसको जल से उसको नहाएंगे तो जल अभिषेक, अनगिनत द्रव्यों का उपयोग करेंगे तो अभिषेक कहेंगे। जैसे हम मधु का, दूध का, दही का, या उसमें हल्दी डालते हैं, तो इन सब से, इन औषधीय द्रव्यों का हम जब उपयोग करते हैं, उससे भी हम अभिषेक करते हैं, भगवान का जल का उपयोग करते हैं। और भोजन करने से पहले, शायद आप में से बहुत लोग करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, भोजन करने से पहले हम 3 बार जल छिड़कते हैं अपने भोजन पे, इर्द गिर्द जल डालते हैं। पहले ज़माने में हम पत्ते पे खाते थे हम, और उसके बाद केले के पत्ते पे, तो विशेषतः ताकि चींटियाँ या कीटाणुएं ना आए उसके लिए भी जल छिड़कते थे। लेकिन फिर भी विशेष उसको पवित्र करने के लिए अपने भोजन को हम जल छिड़कते थे। आज भी छिड़कते हैं, मैं भी छिड़कती हूँ। और मैं आपसे आग्रह करूंगी, आप हिचकिचाइए मत, आप को शर्म नहीं आनी चाहिए जब आप अपने भोजन करने से पहले अपने प्रार्थना कर रहे हैं या जल छिड़क रहे हैं। या अभी आजकल हम जानते हैं, अपने फैमिली के साथ हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो अगर आप घर से थोड़ा जल ले जाएं और वहां पर थोड़ा अपने भोजन पे खाने से पहले छिड़क दें, प्रार्थना करें। मैं जानती हूँ बहुत से हमारे हिंदू भाई बहन जो है आज बहुत से वेजिटेरियन नहीं है, बहुत लोग वेजिटेरियन है लेकिन बहुत वेजिटेरियन नहीं है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा जल छिड़क के पवित्र करके उसको खाइए, क्योंकि ये शरीर जो है हमारे हिंदू धर्म में एक मंदिर स्वरूप देखा गया है। तो इसमें भोजन डालने से पहले, अर्पण करने से पहले उसको पवित्र अवश्य कीजिएगा, और विशेष ध्यान आप जरूर दीजिएगा। ले जाइए थोड़ा सा जल अपने साथ जब खा रहे हैं, तो शर्म मत कीजिए मेरे भाई बंधुओं, मेरे बहनों, शर्म मत कीजिए, अपने धर्म पर गर्व कीजिए। थोड़ा जल छिड़क के आप मन में ये सोचिए, अगर मंत्र नहीं आता ये सोचिए कि आप अपने भोजन को पवित्र कर रहे हैं, क्योंकि ये जल में जब आप उसको पकड़ते हैं तो हमारी भावना चली जाती है जल में। तो इस पर आप ध्यान देके जल छिड़क के आप अपने भोजन कीजिए। साथ ही साथ हम जब भगवान को जल अर्पण करते हैं, हाथ से उसको जलांजलि करते हैं, अब जब उसमें हम डूबते हैं पानी में तो जल दिवासम करते हैं। और जब हम व्रत करते हैं, बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो शाकाहारी भोजन पे व्रत करते हैं, जो लोग शाकाहारी हैं फल फूल पर, फलाहार पर व्रत करते हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं मेरे जैसे तो हम जल पे करते हैं, यानी कि जलासी ऐसे व्रत करते हैं। तो जल पर बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया है। और कहीं पर आप देख रहे हैं, भारत में तो देते ही हैं, मॉरिशस में भी या फ्रांस में, अगर किसी को देख रहे हैं आप हिंदू हैं, जल में खड़े हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, तो वो एक मंत्र कर रहे हैं, वो जल जपम कर रहे हैं। आयुर्वेद में काल चिकित्सा कहा गया है वाटर थेरेपी को, और वो बहुत ही यूज होता है आदि काल से हमारी हिंदू संस्कृति में। बहुत लोगों को शायद पता नहीं है कितना महान है, कितना उत्तम है
कितना अग्रगण्य है हमारा हिंदू संस्कृति। जन्म से पहले ही, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे संस्कृति में पानी से जुड़े हुए कितने संस्कार हैं। इसलिए जल को बहुत महत्व दिया गया है हमारे हिंदू संस्कृति में। बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के साथ दोनों को जल से शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद जड़ी बूटियों से, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से उनको नहाया जाता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म होता है, उनको अपने मेंसेस होते हैं, तो आप जानते हैं मुंह से दुर्गंध आती है, या हम बहुत पर्सपिरेट करते हैं तो दुर्गंध आती है, अपने आप से थोड़ा शरीर में दुर्गंध हो जाता है। तो इसलिए आप मासिक धर्म में जब आप स्नान कर रहे हैं, थोड़ा आप हल्दी पानी डाल दीजिए, कुछ जड़ी बूटियां डाल दीजिए, उससे स्नान कीजिए। उससे आप पवित्र भी होंगे, स्वच्छ भी होंगे और आपको एक शक्ति भी मिलेगी। और हमारे धर्म संस्कृति में पंच महाभूत कहा गया है, जो जल है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, वायु है और साथ ही में अग्नि है। तो इसमें पानी परिपूर्णता एवं जीवन को संबोधित करता है। हम सब कुछ को हम सम्मान देते हैं, विशेषकर वाटर को, विशेषकर पानी को, उसको हमने अमृत का स्थान दिया हुआ है, क्योंकि जल के बिना जीवन ही नहीं। और ये जो जल का गुण है वो स्वाद को संबोधित करता है, जो अंतरिक्ष है वो ध्वनि को संबोधित करता है, जो वायु है वो स्पर्श को, एवं अग्नि जो है वो दृष्टि को संबोधित करता है, और जो पृथ्वी है वो सुगंध को संबोधित करता है। तो साथ ही साथ पानी हमारे मन से, हमारे मानस से जुड़ा हुआ है। वो हमारे सेंसेस से, हम उससे, वो थोड़ा सुपीरियर है, ऊपर है। और साथ ही साथ वो हमारे परसेप्शन को, अनुभूति को और अनुमान को, वो उससे हमें ज्ञान मिलता है। तो बहुत बहुत महत्व है जल का हमारे हिंदू धर्म में। और हमें भोजन कहाँ से मिलता है, स्वास्थ्य कहाँ से मिलती है, वो है जल, क्योंकि जल से भोजन वो बनती है और उससे हम भोजन खाते हैं। उसके बाद हम पूजा पाठ करते हैं, हम यज्ञ हवन करते हैं, ये त्याग करते हैं ताकि वर्षा हो, ताकि भोजन हमें मिल सके। और ये जो त्याग होती है वो हमारे कर्मों से, अच्छे कर्मों से होती है। तो जल जो है पूजा पाठ एवं भोजन के बीचों बीच आता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, अन्नाद भविन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यजात भवति पर्जन्या यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो पानी का बहुत महत्व है। हमारे धर्म संस्कृति में कितने सारे धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे, लेकिन जो 4 प्रमुख ग्रंथ है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में वरुण देव को बहुत महत्व दिया गया है। वरुण देव जो समुद्र एवं वर्षा के स्वामी है और जो सत्य और न्याय के प्रतिनिधि है, इस प्रकार से वरुण देव को संबोधित किया गया है। और मुझे गर्व है, मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने वरुण मेरा नाम रखा। हमारे हिंदू धर्म में इसीलिए हम देख के नाम रखते हैं, पंडित विद्वानों से पूछ के नाम रखते हैं, क्योंकि नाम जब हम रखते हैं उसका प्रभाव उस व्यक्ति पे होता है। तो वरुण देव जो है वो समुद्र एवं वर्षा और सत्य एवं न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वैदिक धर्म में हम कहते हैं कि हम जब जल का उपयोग करते हैं उससे हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और हमें मुक्ति प्राप्ति होती है। तो भारत में आप जानते हैं कि कितने सारे विद्वान, कितने सारे महान महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसे भगवान कृष्ण, जैसे महारथी कर्ण, उन्होंने नदी के तट पे उनके साथ उनका जन्म हुआ, यानी कि उनसे जुड़े हैं। नदियों की बातें, जल की बातें उनके जन्म भूमि से, उनके जन्म कहानी से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जब हम गंगा माँ की बातें करते हैं, जो प्रतिनिधित्व करता है मुक्ति का, चेतना का, वो शिव जी के जटा से आते हैं। और किस प्रकार से भगीरथी ने उनको पृथ्वी पे लाया, शिव जी के जटा पे किस प्रकार से वो आए गंगा माँ, वो तो आप जानते हैं। शिव जी जो है आध्यात्मिक गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं और इससे जो है जल से हम सभी पवित्र होते हैं, जो भी उसके
संपर्क में आता है। हम हिंदुओं का मानना है कि जल जीवन है, लेकिन जल जीवित है, क्योंकि उसमें एक चेतना है, उसमें एक स्मृति है, मेमोरी है, और वो जो भी ग्रहण करती है उसको व्यक्त करती है, वो इंफॉर्मेशन को व्यक्त करती है, और जो कुछ भी हमारे संपर्क में आता है, मनुष्य के संपर्क में आता है, वो उस पर प्रभावकारी होता है। इसलिए जब हम मंत्र वगैरह बोलते हैं या जल को छू के सोचते हैं कुछ, उसका प्रभाव होता है। तो विवाह के पहले भी हम कुछ संस्कार करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं जल से, हल्दी पानी से, दूध से। जब हम जनेऊ लेते हैं, जो लोग जनेऊ लेते हैं तो उनको पता ही है, जो लड़के होते हैं अपने सर का मुंडन करके वो विशेष औषधीय जल से नहा के, लड़कियां भी विशेष औषधीय जल से नहा के हम लोग जनेऊ लेते हैं। और जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो जल का उपयोग करते हैं हिंदू धर्म में। साथ ही जब हम दान दे रहे हैं तो जो कुछ भी हमें दान देना है उसको पवित्र करके हम दान देते हैं। हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो फूल से भी एवं थोड़ा जल छिड़क के थोड़ा आशीर्वाद देते हैं। और आप तो जानते हैं हमारे ऋषि मुनि या जब पंडितगण जब नाराज होते हैं तो किस प्रकार जल लेके श्राप भी दे देते हैं। ये सब हमारे हिंदू धर्म में है। साथ ही जब हम प्रातः स्नान करते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अपने आप को तेजस्वी बनाने के लिए, और जो भी नकारात्मक प्रभाव है उसको हटाने के लिए हम प्रातः स्नान करते हैं। तो उससे पहले हम योगाभ्यास नहीं करते या तकलीवा नहीं लेते, अपना ब्रेकफास्ट नहीं लेते। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हमारी, क्षमा करें, हिंदू धर्म में। साथ ही साथ जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे 16 संस्कार है जो बहुत महत्व रखता है। 16 संस्कार, जैसे एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, माता पिता उसके जन्म का प्रतीक्षा कर रहे हैं तो संस्कार कर रहे हैं। अब वो अपने फैमिली लाइफ में जाएंगे तो उससे पहले एक बच्चे की मनोकामना है तो गर्भाधान संस्कार होता है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से पहले से मृत्यु तक संस्कार होते हैं। और ये 16 संस्कार बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन के 4 प्रमुख पड़ाव, जिसको हम 4 आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, शादी करते हैं, उसके बाद वानप्रस्थ यानी कि हम नाना नानी दादा दादी बनते हैं और या फिर उस उम्र में हम ज्यादा सामाजिक कार्यों में मदद करते हैं। उसके बाद संन्यास लेते हैं यानी कि सबसे हम अलग होके रहते हैं, परिवार से भी हटके। अब बच्चे जो है बड़े हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं, तो हम उनसे हटके हम संन्यास लेते हैं। मैं भी लेना चाहूंगी एक दिन, अगर प्रभु की कृपा रही, हो सका तो ये सब होता है संस्कार जल के साथ। और जल के साथ तो कितने विश्व भर में महान महान स्थल बने हैं, सिटीज बने हैं। हम पानी से अपने आप को पवित्र करते हैं, पानी से खेलते हैं, पानी को पीते हैं और पानी से पूजा पाठ करते हैं। यानी कि जल के बिना हम जी नहीं सकते। हम पानी को ऐसे ही हिंदू धर्म में लेते नहीं, डायरेक्टली नहीं लेते, यानी कि नल से लिया और उसको पी लिया, नहीं। हम उसका सम्मान करते हैं, उसको रखते हैं एक माटी के बर्तन में अगर हो सके, नहीं तो एक पतीली में रख दीजिए, या फिर आप उसको एक कॉपर वेसल में रख दीजिए। और पुराने ज़माने में आज भी कुछ लोग करते हैं मेरे जैसे, उसको रख के उसके ऊपर एक फूल रख देते हैं या एक दिया जला देते हैं, उसका सम्मान करते हैं पहले कि ये जल आया है हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, पवित्र होके हमको सुख समृद्धि स्वास्थ्य प्रदान करे। तो इस प्रकार से हम जल का सम्मान करके उसको लेते हैं। और साथ ही साथ जल अगर जन्म से पहले उसका महत्व है तो मृत्यु पर भी, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप जानते हैं उसको हम नहाते हैं, और उसको नहाने के बाद जब उसको जो है अग्नि से जला देते हैं, उसके बाद उसकी जो एशेस लेते हैं उसको लेके हम पानी में उसके अस्थि को विसर्जन करते हैं। उसके बाद वहां से आके हम खुद स्नान करते हैं उनके सम्मान में। उसके बाद अपने घर को स्वच्छ करते हैं, या फिर अगर हमारे घर में नहीं रहते हैं, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जब हम घर पहुंचते हैं
तो अपना पवित्र करके घर में जाने से पहले उसके बाद हम स्नान करते हैं। तो ये सब हम करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इसको विशेष 3 रूपों में देखा गया है, जो हमारे विचारों को पवित्र करता है, हमारे वाक को जो भी हम बोलते हैं उसको पवित्र करता है, और हमारे कर्म को पवित्र करता है। पानी को पवित्रता का स्रोत कहा गया है, जीवन देता है वो, लेकिन साथ ही साथ जो बुराइयां हैं उसको नष्ट करता है। हमारा अंतिम उंगली, जिसको हम अनामिका कहते हैं, वो जल तत्व, वरुण तत्व को संबोधित करता है। और ये वरुण मुद्रा जब हम ऐसे करते हैं, आप ध्यान अलग अलग मुद्राओं को करके कर सकते हैं, ऐसे जब हम करते हैं तो ये वरुण मुद्रा कहलाता है, यानी कि जल मुद्रा। और अगर बहुत जल है, शरीर में ज्यादा जल है, तो जलवर्धक मुद्रा भी करते हैं हम योगा में। तो जल का हमारे संपूर्ण शरीर में विशेष महत्व है। आयुर्वेद में अगर हम देखें, कहा गया है कि सुबह सुबह आपको जल पीना चाहिए, 2-3 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए, ताकि आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स है, जो निगेटिवनेस है, वो चली जाए और आपकी इंटेस्टाइन जो है वो शुद्ध हो जाए। तो गर्म पानी पीना चाहिए। तो इससे क्या होता है, पाचन शक्ति भी ठीक रहती है, अच्छी तरह से हम टॉयलेट भी जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, और हमारे शरीर में जो त्रिदोष है, जो वात पित्त कफ है, उसको वो प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो हम खाते हैं वो हमें स्वस्थ देता है, और साथ ही जो हम चखते हैं, ये सब, ये स्वाद, ये सब वात पित्त कफ को प्रतिनिधित्व करता है। वात यानी कि वायु और अंतरिक्ष, पित्त यानी कि अग्नि और पानी, एवं कफ यानी कि पृथ्वी और पानी। तो उम्मीद है आप इस पर ध्यान देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो किसी के साथ आप अवश्य बांटिए, और साथ ही साथ आप अब ठीक से बैठ जाइए। हम ध्यान करेंगे, आंखों को बंद करके 3 बार श्वास लेंगे नासिका से, फिर मुंह से बाहर निकालेंगे। अपने संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग को याद करते हुए, पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए, आप अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, मुझे प्रणाम कीजिए अपने हृदय में। देवी देवताओं का आवाहन कीजिए, शिव भगवान, शिव शक्ति भगवान का आवाहन कीजिए। मैं एक पंडिता, एक चिकित्सक एवं रेकी मास्टर की हैसियत से आपको प्रेम, आशीर्वाद और कृतज्ञता भेजती हूँ, ताकि आपको शक्ति मिले, स्वास्थ्य मिले, सुख समृद्धि मिले, और आप पवित्र हो जाए। याद कीजिए अपने परिवार के समस्त सदस्यों का। मैं याद करती हूँ अपने माता पिता और भाई रणबीर जो मॉरिशस में है, मेरे सभी परिवार और हित मित्र जो मॉरिशस में है, मेरे सभी परिवार जो फ्रांस में है, विशेषतः मेरे पति सेबास्टियन, मेरे 4 महीने का पुत्र कल्याण, मेरे भाई विक्रम, सभी परिवार और मित्र फ्रांस में, यूके में, भारत में, विश्व भर में, मेरे हित मित्र, मेरे हितैषी, मेरे सखी, मेरे सभी प्रियजन, आप जो वीडियो देख रहे हैं, बाद में जो वीडियो भी देखेंगे, जितने भी लोग आज अपना जन्म दिवस या कोई विशेष तिथि मना रहे हैं, आपको प्रेम आशीर्वाद भेजते हैं। जो लोग किसी दुखी परिस्थिति में हैं, दुख से ग्रस्त हैं, उनको सहानुभूति भेजते हैं। कृतज्ञता है उन सभी लोगों का जो काम कर रहे हैं, और सहन शक्ति भेजते हैं जो लोग काम कर रहे हैं। जल में, थल में, आकाश में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं, सबको ये सकारात्मक शक्ति भेजते हैं। पृथ्वी माता को एक गोलाकार सुरक्षित कवच में ढांच देते हैं। कुछ लोगों का नाम मैं लेने जा रही हूँ जो बीमार हैं, उनके बारे में सोचते हैं। Je prends le nom de quelques personnes qui sont malades. On va penser très fort à eux. Let's think about these people. They are not that well. Let's think about them. Mina, 26 years in Mauritius at Port Louis. Rajshri, 24 years at Mont-Salmon-Saint-André in Mauritius. Ajay, 62 years in Mauritius at Saint-Paul. France, Ombrelle, 32 years at Montigny. चलिए गायत्री मंत्र करते हैं।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। 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 चलिए एक शिव स्तुति करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। आदि शंकराचार्य रचिता शिव स्तुति। ओम पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसनां वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरदाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिर्द्याकवह्नात्रिनेत्रं सदानन्मिदेव प्रभु पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं कवेन्द्रादिरूरं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भर्मणा भूषिताङ्गं भवामि कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं शिवाकान्त शम्भो शशाकारद्मौले महेशानशूलिं जटाचूतधारिं त्वमेका जगद्व्यापको विश्वरूपा प्रसीद प्रसीद प्रभु पूर्णरूपा परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीह निराकारमोङ्कारवेद्यं भयो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं न भूर्मिर्न चापो बहिर्न वार्यं च कामास्ते न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो
न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीड अजं शाश्वतं कारणं कारणानं शिवं केवलं भासकं भास्मकानं तुरीयं नः पारमा हन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्भु महेश त्रिनेत्र शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मन्यो न गण्यः शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिं काशीपते करुण्या जगदते कसत्त्वहंस पासि विद्धासि महेश्वरासि त्वत्तो जगद्भक्तिदेव भस्मरारे त्वयेव तिष्ठति जगन्मृश्वनाथ व्ययेय घचति लयं जगदतीदीश जगत्ताममेकं हर चराचर विश्वरूपिम् इति श्रीमच्छन्दकराचार्य विरचितो वेदसार शिवस्तव संपूर्णम्। Now we are going to do a bhajan. चलिए एक भजन करते हैं, एक शिव भजन. Let's do a शिव भजन. I hope that you will repeat after me. Please repeat after me. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. ध्यान रखेंगे शिव तेरा तो, ध्यान रखेंगे शिव तेरा तो, शिव का ध्यान लगाए जा, बाकी सब शिव देखेंगे तू, शिव 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 गाए जा, बाकी सब शिव देखेंगे तू, शिव 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 गाए जा। ध्यान रखेंगे शिव तेरा तू, शिव का ध्यान लगाए जा, बाकी सब शिव देखेंगे तू, शिव 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 गाए जा, बाकी सब शिव देखेंगे तू, शिव का ध्यान लगाए जा। जब मन होगा तेरा शिवाला, तब शिव दर्श दिखाएंगे, जब मन होगा तेरा शिवाला, तब शिव दर्श दिखाएंगे। अलख निरंजन भव भय भंजन, कवच तेरा बन जाएंगे, अलख निरंजन भव भय भंजन, कवच तेरा बन जाएंगे। शिव सुमिरन का अमृत पी के, शिव सुमिरन का अमृत पी के, मन की प्यास बुझाए जा, बाकी सब शिव देखेंगे तू, शिव का ध्यान लगाए जा, बाकी सब शिव देखेंगे तू, शिव का ध्यान लगाए जा। ध्यान रखेंगे शिव तेरा तू, शिव का ध्यान लगाए जा, बाकी सब शिव देखेंगे तू, शिव 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 गाए जा। तू ही शिव का हो ना पाया, शिव तो युगों से तेरे हैं, तू ही शिव का हो ना पाया, शिव तो युगों से तेरे हैं। आती जाती इन सांसों में शिव शंभू के डेरे हैं, आती जाती इन सांसों में शिव शंभू के डेरे हैं। अपनी श्रद्धा का गंगा जल, अपनी श्रद्धा का गंगा जल, शिव पिंडी पे चढ़ाए जा, बाकी सब शिव देखेंगे तू, शिव का ध्यान
बाकी सब शिव देखेंगे तू शिव 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 गाए जा। शिव भक्ति पथ शिव मुक्ति पथ शिव ही तारन हारे हैं। शिव भक्ति पथ शिव मुक्ति पथ शिव तारण ही पारे हैं। क्या तेरा क्या मेरा बंधु शिव ही पालन हारे हैं। क्या तेरा क्या मेरा बंधु शिव ही पालन हारे हैं। बात है जो समझाई मैंने, बात है जो समझाई मैंने, तू सबको समझाए जा। ध्यान रखेंगे शिव तेरा तू शिव का ध्यान लगाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तू शिव का ध्यान लगाए जा। ध्यान रखेंगे शिव तेरा तू शिव का ध्यान लगाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तू शिव का ध्यान लगाए जा। बाकी सब शिव देखेंगे तू शिव 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 गाए जा। तू शिव का ध्यान लगाए जा। Now I'm going to close your eyes again. Thank each and every part of your body. Thank Prithvi Mata, Mother Earth. Thank your Guru. Thank me in your heart. Thank all your family members, each and every one. All your near and dear ones. And we thank all the elements, all the living beings. I thank all of you from the bottom of my heart. And don't forget to drink a glass of water. Don't forget to share the video if you want. And leave a commentary. I'll be very pleased to watch your message. And at the same time, also, if you are having any problems or you want me to guide you, I'm here with great respect and humility. And all my workshops, all my courses, all my classes, all my consultation are always free and in France. So as from September, I'll be starting again my consultation in France. So all are free. I work only on Dakshina. So you give how much you can. We priests, we mostly work on Dakshina. We don't have a price tag. So all my consultation are free. If you have, you give. And if you don't have, you don't give. That's how mostly normally we work. So I thank you all from your bottom of your heart. And thank you for being with me. And I hope that you will join me this Friday for the meditation session around 2 p.m. So I'll wait for you. Thank you very much. Thank you from the depth of my heart. Merci infiniment. Je vous remercie de tout mon cœur. Donc je vais vous demander de fermer les yeux encore une fois. Vous allez remercier toutes les parties de votre corps. Vous allez remercier la terre, votre gourou. Vous allez me remercier dans votre corps ainsi que toutes les énergies et tous les membres de votre famille, tous les gens que vous aimez. Je vous envoie beaucoup de bénédictions et beaucoup d'amour. Et je vous remercie d'être avec moi. N'oubliez pas de boire un verre d'eau après la session. Et aussi, j'espère que vous allez me rejoindre vendredi pour encore une fois notre session de méditation, de guérison. Et n'oubliez pas de partager ce vidéo. Et prenez soin de vous. Et merci encore d'être avec moi. आप सभी को धन्यवाद। आँखों को बंद कीजिए एक बार फिर। धन्यवाद दीजिए अपने संपूर्ण शरीर के अंगों को, पृथ्वी माता को, अपने गुरु एवं मुझे धन्यवाद करके आप समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद कीजिए। अपने हित मित्र हितैषी परिवार के सदस्यों को धन्यवाद कीजिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। उम्मीद है आप शुक्रवार को, फ्राइडे को मेरा साथ देंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो बांटिए, कमेंट्री छोड़िए। मेरे सत्संग जो है फिर से सितंबर में शुरू होंगे। आप जानते हैं हम लोग पंडितगण दक्षिणा पर काम करते हैं, प्राइस नहीं डालते। तो सितंबर में मेरे सभी जो क्लासेस, कोर्सेज हैं, कंसल्टेशन है, सब फ्री होते हैं फ्रांस में। तो आप ध्यान दे सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। Je vous remercie infiniment. Thank you so much for being with me today. समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम
अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। हर 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 महादेव। समस्त देवी देवताओं की जय, आपकी जय, हिंदू धर्म की जय। Glory to all the divine beings, glory to you, glory to our Hindu culture, gloire à toutes les énergies divines, gloire à vous et gloire à l'hindouisme. Namaste, Om Shanti.